My name is Gulstan Raja, and basically I'm professor of electrical engineering at UD Texla. I am here till from June 1997. It's almost 25 years here. So OE is something which I have special interest in it. So that's why I normally volunteer sometimes to do these presentations. So I think that for more details, you can go to electrical engineering department website of UT Texas, and then you can find out more profile about my achievements during my tenure. So let's start with this presentation. So I have been asked to talk about OB system of education plus related concepts with CEPs, PBL, OELs, and FYDP with SDGs. So we'll start with basic things and related concepts, and then we will talk about CEP, PBL, OEL, and PIP with SDGs also. So first of all, background. Basically, there is a engineering accreditation board of PEC, and that is basically interested with accreditation process. Means that all the accreditation of engineering programs are done through this engineering accreditation board of PEC. So therefore, what is the purpose of accreditation? The purpose of accreditation is to have assurance that our academic aims and learning of institute, learning objectives of institute programs at which institute at which program is offered are pursued and achieved. So this is the first objective, which is checked during accreditation process. Then second objective, in fact, which is there to ensure that effectiveness of educational program, that whether program is effective in inculcating required skills in students, and CQI is there or not. So this is the second assurance which accreditation basically requires. The third is that spirit of OB over period of accreditation cycle is followed or not. Means that if we are not doing properly CQI every year, then it means that spirit of OB is not followed. So doing CQI only once or in not a regular period is not a good thing. So therefore, we have to follow the spirit of OB over a whole period of accreditation cycle. So these are some basically key objectives, and the fourth one is that graduate attributes. Graduate attributes, I will call them GAs, but these are actually PLOs. So in PEC manual, they are called as graduate attributes. So therefore, please keep this in mind that whenever I say GAs means the 12 PLOs. So the last assurance which is there about graduates of program have attained all GAs or 12 PLOs as per manual or not. So these are the four objectives, four tasks, and which are basically checked by accreditation body. And when certain program is accredited, it means that accreditation body is certifying that these four tasks are met substantially. These four points which I have shown it to you in this slide number 2. The slide number is shown at the bottom of it. So if you don't see slide, so please let me know. So this is something which is there. So this background, what I am showing it to you, basically gives you a big picture that whenever PEC teams comes in, what they look for. So these are the four things which basically are checked by PEC accreditation team, right? Now, because every program is focused or centered on curriculum. So curriculum is the main thing which is being taught during 4 years of degree program. So therefore, it has a prime importance. The curriculum has prime importance. So normally in our universities, we follow HEC / now I'll call it as PEC curriculum, and basically, but again, HEC PEC curriculum is a guideline. So the important thing is that there is a requirement of National Equivalence Qualification Framework, and that NEQF, which says that 65% to 70% should be of engineering and remaining should be of non-engineering courses, and then the division is given, that should be followed. As far as elective courses are concerned, institute can add elective courses on their own free will, depending upon the requirement of it. But anyhow, the curriculum is the most important thing. And
curriculum should be centered according to the needs of the students and stakeholders. For example, if you in your area, if you feel KG, there is a requirement of certain subject, so you can add it in an elective list. So there is no hindrance as far as HECPC is concerned. And then second thing is that objectives and outcome driven. It should be objective and outcome driven. Means that we should formulate objectives of each course, or for everything there should be objectives, and not only formulating objectives, and outcomes must be assessed and evaluated. So this is the important thing, that outcomes must be assessed and evaluated regularly. And then obviously when you are going to assess and evaluate outcomes, so there should be suitable tools like direct assessments, indirect assessments. If rubrics are there, so rubrics should be there. So therefore the suitable tools should be there to measure the attainment of those outcomes. And then results should be used for evaluation of CQI. So this is something, these are the 4 points which are related to characteristics of OBE curriculum. Now basically let's move to, if I move to next slide, sorry. So if you look at this, that if I draw all the things which I have mentioned in last slide graphically, so we have this, if you look at left of this slide, we have institutional mission and vision statement, right? So if, and then there are stakeholders. Now stakeholders means employers, alumni, even parents, faculty, all these are stakeholders. And normally when we do survey, we only practice in our universities that we use alumni and employer survey for measuring the attainments of program education objectives. But stakeholders also include faculty and parents also. So anyhow, so these are the 2 things, that there is institutional vision and mission and stakeholder interest, and we will be using these 2 things as a basis for formulating the program educational objectives. So once you have program education, so the point here is that, for example, you cannot formulate program education objectives which are in opposite direction of your institution vision and mission. It should be in line with institution mission and vision. It should not be in opposite direction or in some other direction. So therefore one has to take care while formulating the program educational objectives that it should be in line with your institute mission and vision. And the second thing is stakeholder interest, that your employer is an important thing, that normally employer and alumni what they want and what type of jobs are there, and according to it you will be using those interests to formulate program educational objectives. And once you have program educational objectives, then the next thing is program learning outcomes. Now this is something which we call that in theory program learning outcomes are basically formulated by institute, but in practice as per PCOB manual, PLOs are given, which are given as a form, in the form of graduate attributes, and normally institutes in Pakistan they adopt them as it is. But as far as practically, one can have more than these 12 PLOs. If a certain institute wants, they can have 14 PLOs, they can have 10 PLOs, but they need to map it with the PEC PLOs, that they are substantially equivalent to PEC PLOs. So normally institutes they adopt the PEC PLOs as it is, they don't do any modification in it. So what is the objective of outcomes? To check these 3 parameters in graduates, these 3 attributes in graduates. What are those? We call them as KSA, knowledge, skills, attitude of graduates. So this is being basically checked through attainments of PLOs. Then we have course related learning objectives. So now basically our CLOs, right? Consider it as course learning outcomes. There is a maybe typo. So therefore course learning outcomes. So this is something which is being assessed in every course, and the objective of it is to basically evaluate the performance of student in a respective course. And whenever we formulate course learning outcomes, we basically use Bloom's taxonomy here. And Bloom's taxonomy has different levels, so we map each our course to formulate CLOs in every course, and then map it to Bloom's taxonomy level, that what type of expectations we are having in this course, and then eventually map it to PLOs. So then assessment of these attainment levels, and then we have CQI. So this is a continual quality improvement. So this is an important thing, that the POs are, you see here that this
PLOs are assessed through CLOs, and CLOs are assessed directly, and then CQI is used, right? CQI is used, and then there is, if you look at this here, there is an arrow which is going directly to assessment of attainment levels directly from POs. Point here is that why there is a direct arrow here, because basically we measure the POs in direct assessment, and there different tools are used, and that tools are basically alumni survey and employer survey. So that's why it is not assessed through the PLOs or CLOs, right? And CQI is the integral part of it. There must be CQI regularly to measure the attainments and to take the corrective actions to improve the program. Okay, ji. So I'll stop briefly here, and if you have any question, you are welcome so far. Okay, ji. So if no questions, so you can also ask at the end. Please take notes, and if meanwhile if you don't have any questions, you can ask the questions at the end too, at the end of presentation. Okay, ji. So now there are 9 accreditation criteria of PEC, right? So these are important. Basically, so let's have a look on them. So first criteria is about program educational objectives. Second criteria is PLOs, program learning outcomes. The third is curriculum and learning process. The fourth criteria is about students. The fifth criteria is about faculty and support staff. And then sixth criteria, number 6 is about facilities and infrastructure. Then institutional support and financial resources. Then we have CQI, criteria number 8, and criteria number 9 is about industrial and international linkages. Now, these are the 9 criteria, and when the PEC comes in, they basically assess the program according to these 9 criteria. And they basically have set of rubrics, their own rubrics, and they, have, questions for each criteria, and then they evaluate these 9 criteria through those rubrics. Now, if you look at these 9 criteria, and if you compare it with the conventional OBE, non-conventional system, or the conventional impact system, which is before OBE, so these students, facility, faculty and support staff, facilities and infrastructure, institutional support and financial resources, industrial, so these are already there. So these 4 criteria were already measured in accreditation, which was done before OBE. But if you look at these highlighted 4 criteria, so these are the key criteria in OBE. So these criteria number 1, criteria number 2, criteria number 3, criteria number 4 is basically main criteria, 4 criteria which are the, you can say, the backbone of OBE. For example, if you have satisfactory performance, a good performance in criteria 4, 5, 6, 7 and 9, but say don't have satisfactory performance in criteria 1, 2, 3 and 8, then accreditation may be denied under OBE, because OBE consider these 4 criteria number 1, 2, 3, 4, 8 as of prime importance. So deficiency, weakness in these 4 criteria has more value than other criteria as far as accreditation under OBE is concerned. So therefore, one has to institute or department has to look at these 4 criteria thoroughly and try to not to have weaknesses or deficiencies, especially in these 4 criteria, because they are very important criteria as far as assessment under OBE is concerned. Okay, but it does not mean that other criteria are not important. Other criteria are also important. So these criteria details is mentioned in OBE manual. So I would suggest to read the manual, which is freely available through PEC website. Okay. So the first thing, now let's move to these important parameters in OBE. The first one is PEOs, Program Educational Objectives. Here basically PEOs are broad statements. Now what are PEOs? PEOs are, so in PEOs, O is for objective. And if you compare the PEOs with CLOs and PLOs, so you will find out that although there is a O at the end, but in PEOs, O is for objectives, and in PLOs and CLOs, O is for outcome. O is for outcome. So objective is something which is attained after some period. As per this manual, that these objectives are expected that our graduates will achieve after few years of graduation. Now, manual says few years of graduation. Now, department or institute has to define themselves that what this few years means. Normally 3 to
5 years, institute defined this one binary number that okay, we will have our graduates to attain these attributes at the conclusion of 4 years after graduation. So therefore, this is something which institute or department needs to do, that define few, that what is the few in their department perspective. So much, but it must be defined. You cannot leave it as open, because few can be of many meanings. So then we have important thing is that program objectives should be aligned with vision and mission of institute, and there should be a process to measure the attainment of program objectives. You know what happens that normally when the institutes normally or department initially starts implementing OBE, they think that we will be assessing them these POs after 3 or 4 years. So let's leave it as empty, or let's not work hard on these assessment or attainment tools. But this perception is not correct. Basically, you have to, or institute have to work on these attainment tools for years right from start. Why? Because they need to demonstrate to the visitation team that their system is in place. Obviously, when they are first batch under OB graduates, and after let's say 3-4 years, they will be mailing it and they will be implying it in CQI of EOs, but they have to implement it right from start to demonstrate that their system is in place. So therefore, there should be proper attainment forms from employers, alumni, and employers and alumni is a must thing, but you can also have additional forms from faculty and other stakeholders. And then you need to analyze them. Again, you need to analyze them, that what is the attainments which you have got from these forms. So this is something, and above that, you have to define the whole process for attainment of EOS and CQI of EOS. Again, because again, we have to demonstrate that your system is in place. So therefore, you have to define the process. Then forms should be there, and then results should be analyzed to demonstrate that system is in place. So this is an important thing, and therefore one has to take these tools, attainment tools and process seriously. Okay, now I'll show you some sample PEOs. Normally, when we say PEO is something which is expected to be attained after 3 years of graduation, it will not be something outcome which will be instant. So let's say after 3 years of graduation. So therefore, you need to use keywords in PEOs which are appropriate, which depicts that they will be measured after 3-4 years of graduation, when a graduate will have certain experience in it. So therefore, in order to do that, I'll show you some sample PEOs. This is something, a PEO of some institute, as an example, that serve competently. Now, serve is the important thing. That obviously this keyword is important. It is depicting that a student will serve after doing graduation. Then exhibit, demonstrate commitment. So naturally, so this is something important thing is that they should depict that they will be attained after years of graduation. Another example is excel in profession, show continuous professional development, and depict professional integrity. So once I visited an institute, and they use keyword like produce. Now produce is not a proper keyword, so one should refrain from using these type of keywords, which indicates that this is something which will be done by institute. And if you use produce means at the time of graduation, but this is not, these POs are not at the time of graduation. PLOs are at the time of graduation, and they are already given in PEC manual, an ability to do this, and ability. So these abilities are created till graduation, but these are something which are over and above PLOs, and they will be achieved after some years of experience, after going into industry, and then they will be achieved. So this is something one has to keep in their mind while formulating PEOs. Then next is PLOs. Remember, if you recall, I said that POs are broader statements, but PLOs are narrower statements. Now this is opposite to it. And narrow statements, and what is the objective? That what students are expected and able to do by the time of graduation. Now this is something which we expect from students, that they should have them at the time of graduation. So PLOs are related to three things: KSA, knowledge, skill, and attitudes, while during progressing through
the program, during 4 years of program. So they will attain certain knowledge, certain skills, and demonstrate attitude. So this is something which is KSA, and basically PLOs are related to these three KSAs. All these 12 PLOs are related to these three KSAs, right? And then program has to demonstrate that students have attained a certain set of these KSAs to a some minimum level. Now this minimum KPI for PL attainment is revised in PEC manual 2019. It was open in 2014 manual, previous manual, but here in 2000 manual they have restricted the institutes to use KPI of at least 50%. So 50% KPI is a must thing. So one can have more than 50% for PLOs, but not less than 50%. So this is an important thing which you need to understand, that it would be deficiency if you go below 50%. So therefore, all students must acquire at least attain 50% in each graduate attribute, that is PLO, individually. So what are those PLOs? I hope I'll not talk more on it, but have a look on it. So engineering knowledge is a PLO1, problem analysis, design development of solution. Then PLO4 is about investigation, PLO5 is about modern tool usage. We have PLO6 is about, so these four, if you look at this, 6 is about engineer and society, 7 is environment and sustainability, and sorry, okay, let me 7 is environment, and 8 is ethics, PLO8 is ethics, PLO9 is individual and teamwork, PLO10 is about communication, and then PLO11 project management, and PLO12 lifelong learning. So these are the 12 PLOs, and they will be assessed through CLOs, mainly through CLOs. Okay, now let's move to knowledge profiles. Now this is additional thing in 2019 manual, that curriculum of engineering, like electrical engineering, should target the following elements of knowledge profile. So there be they call it as WKs. Knowledge profiles are called as WKs. 1 o'clock, after 1 o'clock. So 1 बजे के बाद. So basic profiles, and now there are 8 knowledge profiles, and this is something not a difficult concept, that our curriculum should include courses or content related to these profiles, and one has to map all the contents, all the courses to these knowledge profiles. For example, WK1 natural sciences, so you can have courses related to natural sciences, so you have to list down those courses related to natural sciences. And naturally, you have also WK2 talks about mathematics and computing. The objective is that there must be relevant courses related to all these knowledge profiles. So no knowledge profile should be skipped during 4 years of engineering education. So therefore, one has to map all these knowledge profiles to different courses. Okay. Then after PLOs, we have CLOs. Now CLOs is course learning outcome, and here basically it's a direct method, and we assess relevant PLOs through it, and one has to demonstrate through evidence that mapping of CLOs of each course to respective PLOs is at appropriate level or not in relevant learning domain, right? And then the tools are appropriate or not, which are used for direct or indirect assessment, or rubrics are appropriate or not. And the evaluation process is also at par with the required criteria for attainment of CLOs and PLOs. So, therefore, if I, this is a slide which basically indicates that when to measure these 3 different parameters or criteria, POs, if I summarize, POs are measured few years after graduation, PLOs are measured upon graduation, and CLOs are measured upon course completion. So naturally, PLOs are measured upon graduation. It doesn't mean that we don't measure PLO at the end of every semester.
So you have to measure the, naturally when you will be measuring the CLOs upon course completion, then each course is mapped to PLO. So automatically PLOs will also be measured. So overall one has to compile the cumulative data of PLOs, and one has to ensure, institute has to ensure that every student attain a certain KPI for each of the PLO at the time of graduation. Now I'll give you some sample, example course. This is a digital logic design. To this course, I had taught this once during my tenure, and it's a course which everyone can understand easily. So therefore, I have intentionally selected this course. So I have formulated at that time 3 CLOs for this course. Let me tell you this thing, that there is no guideline, the fixed formula for formulating CLOs, that CLOs should be 3, 4, 2, whatever it is. So it depends upon the requirement of the course and the methodology adopted by the institute. So therefore no formula for number of CLOs, and no formula that which Bloom's taxonomy level or domain we should use for it. But normally theory related courses are mapped to cognitive domain and lab related to psychomotor domain. So therefore, here in this course, there are 3 CLOs. So the important thing is that we should use the keyword. We should use the proper keyword while doing mapping to relevant domain. For example, understand. Understand is a keyword of level 2 of cognitive domain. Level 2 of comprehend or understand. So this is something C2. So if you look at this C2, and it is related to engineering knowledge. PLO1, it is mapped to PLO1, and then application of acquired understanding. So this is the application, so it is mapped to cognitive level 4, and it is mapped to PLOs, PLO2, which is problem analysis, and design of small scale combinational and sequential circles. So design is a keyword taken from for cognitive level 5, and PLO3, design and development of solution, is mapped to these scopes. So these are the just a mapping of these CLOs to PLOs and corresponding Bloom's level. So once you do mapping, this is being done in the start of course, and then mapping merely is that if you do simple mapping and you say okay, we have done it, it's not enough. One has to assess accordingly, and when you will be assessing those CLOs, then you have to use the corresponding keywords in questions. Corresponding keywords in questions. Whenever you use a corresponding make a questions in exam, different assessments. So here you have to like this. Okay, this is mapped to CLO1, this is mapped to CLO2, and then you have to in question paper you have to write all these CLOs in question papers too in different assessment components. That for example, if you are taking quiz, then you have to tell your students that this is related to CLO1, 2, or 3, and then you have to use the proper cognitive levels which you are declared at the start of course. So this is a slide which is a program level view. This is important. Here basically this is a sample slide. So obviously all you have, let's say 35, 40 courses. So all courses should be elaborated in a tabular form, and then they should be mapped to which PLO. You have to indicate this thing that each course is mapped to which PLO. So obviously all courses cannot be mapped to individual course cannot be mapped to all PLOs, but this is something of mapping. And then after that, this for example LCA is mapped to sample in this sample PLO1 and PLO2, and cognitive level 2 and cognitive level 4 is mapped here in terms of Bloom's taxonomy. So this picture, this will give you overall picture of the program. So let me tell you this thing, that normally it is being expected that all cognitive levels up to C6 will be covered in the program. Again, there is no formula that how many courses should be in C6 or not. There is no formula for it. But again, you have to do the best judgment, but at least there should be some courses up to C6 level. And normally psychomotor is up to 3 to 4 levels, P4. And best practice is about effective is also 3 to 4 levels. I mean, so this gives you a whole overall picture that where your courses are, which courses are mapped to C1, C2, C3, C4. Normally, I recommend that this should be approved by your somebody, and it should not be changed by a teacher individually, because it will create a lot of complexities if an individual teacher by its own free will change these mappings. So it will add a lot of complexity in it. For example, you have, so the best way is to do this in a departmental meeting and then approve it, and once approved, then if naturally there may be a chance in case of CQA you need to change the level,
So then you have to conduct a meeting, and then it is notified and approved by the same body which has approved the initial mappings and these Bloom's levels, right? So this is the important thing one has to keep in this mind. So overall, this will give you a picture, and your OB team will have an idea that how many courses are mapped to PLO 1, 2, 3, and how many levels we are attaining in these courses. Now let's move to CQI. Now CQI is the backbone of OB. I mean, if you compare the conventional system before OB with OB, so this is the main primary difference, that we want to continually improve our program. And in order to do that, CQI is a must thing. So as per PVC manual, CQI must be implemented at all levels. So you have 3 levels: CLO level, PLO level, and PEO level, right? So the best, I mean, this is my suggestion. I mean, there is nothing mentioned about it, but the best thing is to define the first step is, or to define the statutory, ideal statutory body responsible for review and approving corrective actions at each level. For example, you can say this thing that okay, we have board of studies, or board of studies is responsible for approving, reviewing, and approving corrective actions for PO, PLO level or CLO level, whatever. There is no formula for it, but at least you should have defined your statutory, ideal statutory bodies which can review and approve the corrective actions at each level. So this is the first step, and then you can approve your processes from these statutory bodies, and then you can do the CQI. So again, as I told you, that CQI can be at 3 levels, that are CLO level, PLO level, and PEO level. So now let's talk about CLO level. Now at CLO level, basically, we have possible input documents. What are the possible inputs for conducting CQI? So it can be, first of all, is CLO course assessment, the data which you have, assessment data which you have. Second is course instructor feedback report. This is another thing which is a crucial, parameter for doing CQI at CLO level, because instructor is the key person which has, conducted that course, and its recommendations should be also considered while doing the CQI. And there can be a student feedback report. So after getting these data, assessment data from these 3 things, uh, there can be a CQI report for each course. Be prepared. You can use the graphs to show the CLO attainments, and naturally you have to define. One has to define the KPIs for it. So once if KPI is not met in any CLO, then corrective actions are required, and corrective actions are mandatory. But if KPI is not met, KPI corrections are, for example, if you are defining a corrective actions at cohort level. So if KPI is not met, then corrective actions should be suggested by a certain committee, and they should be approved by your body which is responsible for CLO CQI. And once they are approved, then these cohort level CQI suggestions should be implemented in the course when it is offered next time. When it is offered next time, right? This is, I'm stressing on this thing, that when it is offered next time. Okay, so one has to keep this in mind. So I'll give you small, pauses so that you can also read the slides. So that at the end, when you will ask questions, so you will be in position to ask questions. Okay, so let's move to the next slide. So this is just a sample format to give you this course 1 gaps observation. You can suggested corrective actions. So committee, or in our institute we have board of undergraduate studies. So depending upon the institute hierarchy, one can have some other maybe board of studies or something like that. So approval loop can be done by the relevant statutory body which you have defined for it. Okay. Then example, what you can do, for example, cohort level पे
if you have defined a KPI of 50%, so what does it mean? That 50% of the students should attain at least 50% of CLO. If you have defined a KPI of 50% and 50% or more students have attained that CLO, so no corrective action is required, right? Otherwise, CQI process will be involved. If less than 50% attain, do not attain. Sir, there is one question. Ji, ji please. Sir, from Dr. Rafiq Naik. Ji please. I'm listening. Ji please go ahead. Assalamualaikum, sir. Can you hear me right now? Yes, sir. Some question. Assalamualaikum, sir. I have one question from previous slide regarding CQF or CLO. Ji please repeat the question because I didn't hear you. Could you Just one speak loudly? Can you hear me, sir? Yes, now I can hear you. So I just want to confirm one thing because during our two previous visits, we had basically contradicting statement regarding CQF or CLO. As you mentioned right now, that CQI should be performed in order first year should be performed in order to cover that subject for next semester, correct? Right. Upcoming So, semester, cohort level. I'm talking about cohort level, right? Okay. जी, I'm talking about cohort level. Yes, I'm talking about cohort level. Yes. So मैं बस सवाल ये करना चाहता था क्योंकि पिछले विजिट में क्या हुआ कि हमारे पास जो आया था एवोल्यूटर, तो उन्होंने कहा कि आपको CQI ड्यूरिंग सेमेस्टर परफॉर्म करना चाहिए फॉर CLO, मींस ऑन क्लास लेवल और कोहॉर्ट लेवल, एंड बिफोर दैट जी सर जी गो एंड मैं आई जस्ट वांट टू आस्क कि देखिए कोहॉर्ट लेवल और स्टूडेंट लेवल दो डिफरेंट चीजें हैं। इनको आप मिक्स नहीं कर सकते। एक होती है CQI एट स्टूडेंट लेवल, एक होती है CQI एट कोहॉर्ट लेवल। जो ये CQI में आपकी कोहॉर्ट लेवल जो नेक्स्ट सेमेस्टर में इसके करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट होंगे, ये कोहॉर्ट लेवल की होगी। ठीक हो गया सर। मुझे थोड़ा सा है कि और से बढ़ा दिया कि आपके पास चॉइस है शायद। सर आवाज थोड़ी कट रही थी, कैन यू रिपीट अगेन? आई एम सेइंग दिस थिंग कि ये जो मैंने अभी आपको CQI बताई ना, ये CQI है कोहॉर्ट लेवल की। कोहॉर्ट लेवल की CQI जो है वो जब कोर्स नेक्स्ट टाइम ऑफर होगा, आप पहले करेक्टिव एक्शन ले लेंगे, अप्रूव करा लेंगे। इंप्लीमेंट कब होंगे? जब वो नेक्स्ट टाइम कोर्स ऑफर होगा। अगेन कोहॉर्ट लेवल की CQI, ठीक है? ओके सर, ओके। लेकिन अब आपको एवेल्युएटर ने कहा कि आप, अब मुझे नहीं पता, देखें एवेल्युएटर्स जो होते हैं ना, आपने मैनुअल को फॉलो करना, आपने एवेल्युएटर को फॉलो नहीं करना। दिस इज स्टैंडर्ड थिंग। आई मीन क्योंकि आप एवेल्युएटर्स को फिर एक डिफरेंट एस्पेक्ट उनका होता है, अपनी एक चीजें होती हैं उनकी। तो आपने अभी मुझे कहा कि जी, उन्होंने कहा कि जी और कोहॉर्ट लेवल और स्टूडेंट, या कोहॉर्ट लेवल पे करें या स्टूडेंट लेवल पे करें, ऐसी बात है? असल में हुआ ये कि ड्यूरिंग सेमेस्टर, लेट्स सपोज स्टूडेंट लेवल पे बात कर रहे हैं, तो एवोल्यूटर ने बोला इन प्रीवियस विजिट, उन्होंने बोला कि आप थ्रू आउट द सेमेस्टर बिफोर मिड थोड़ा देखते हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं, उसके बाद मिड के बाद दोबारा आप CQI परफॉर्म करें, या मिड के बाद कोई एक्शन लेना हो। तो पहले डायरेक्शन ये थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब नेक्स्ट विजिट हुआ तो उन्होंने कहा कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप थ्रू आउट सेमेस्टर फॉलो अप करते हैं। तो आप क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जाके कोहॉर्ट लेवल पे एक CQI परफॉर्म करते हैं फॉर CLOs। So these are two statements. So again, I think we got clear कि स्टूडेंट लेवल पे हमें परफॉर्म करना आता चाहिए थ्रू आउट सेमेस्टर, या जस्ट हम कोर्स के लिए रख देंगे एट द एंड ऑफ सेमेस्टर हम नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए कुछ सजेशंस या डायरेक्शंस दे दें। तो these two statements were like that, but उन्होंने ये क्लियरफाई नहीं किया कि स्टूडेंट लेवल और क्वाड लेवल, जस्ट दे सेड कि CQI should be performed. ओके, मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ। देखें, कोहॉर्ट लेवल पे CQI करना मैंडेटरी है क्योंकि आपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करना है ना, और प्रोग्राम को इम्प्रूव का मतलब है कोर्स को इम्प्रूव करेंगे तो प्रोग्राम भी इम्प्रूव होगा। अगर आपके लेट्स से आपके 100 स्टूडेंट है, आपके 70 स्टूडेंट्स ने वो KPI अटेन ही नहीं किया, 70 स्टूडेंट उस CLO में फेल हो गए, तो आपने ये तो नहीं कहना कि जी स्टूडेंट नालायक। आपने ये कहना है 70% का मतलब KPI, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब फेल हुए तो आपने अपने सिस्टम को स्टडी करना है कि कोर्स में क्या इशू था जिसकी वजह से ये 70 स्टूडेंट्स 100 में से फेल हो गए। KPI मीट नहीं हुआ ना 50% अगर आपने डिफाइन किया, तो फिर इसके बाद आप ये करेंगे कि उसमें से सजेस्ट करेंगे करेक्टिव एक्शंस कि क्या क्या करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। मसलन कोई टॉपिक है डिफिकल्ट है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग की जरूरत है, या ये जरा रिव्यू लेवल की जरूरत है, CLO रिव्यू हो सकता है, असेसमेंट मेथोडोलॉजी जनरली लोग करते हैं, असेसमेंट मेथोडोलॉजी को चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। तो अब ये चीजें देखिए, स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द, आपको डाटा कब आएगा कोहॉर्ट लेवल का? आपका डाटा तो एंड कोर्स के एंड में आएगा, तो आप उस कोर्स पे तो नहीं इंप्लीमेंट कर सकते ना वो कोहॉर्ट लेवल की CQI। वो नेक्स्ट टाइम जब कोर्स ऑफर होगा तो तब इंप्लीमेंट होगा। तो ये ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है कोहॉर्ट लेवल की CQI CLO लेवल पे। Am I right? ठीक है सर,
ओके You're right, sir. Now, one more ओके thing, sorry to break your time. अभी Just, मैं स्टूडेंट लेवल की बात कर रहा हूँ, फिर शायद उससे क्लियर हो जाए। अब आगे आपके स्टूडेंट लेवल की CQI CLO पे, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट लेवल की CQI भी आप देखें, आपने एक CLO के लिए आपने कहा कि मैं एक क्विज लूंगा, एक असाइनमेंट दूंगा, एक मिड का क्वेश्चन दूंगा, एक एंड का क्वेश्चन दूंगा फॉर एग्जांपल। तो अब आप इन चारों असेसमेंट में से आप ऐड करोगे तो आपको पता लगेगा ना कि CLO की अटेनमेंट आई है कि नहीं आई। तो वो भी कोर्स के बाद ही आएगी स्टूडेंट लेवल की भी, बीच में तो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कोर्स खत्म हुआ, आपने देखा कि स्टूडेंट लेवल की अटेनमेंट एक CLO में कितनी आई। अब अगर स्टूडेंट लेवल पे अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है तो करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है कि स्टूडेंट को बुलाया जाए, उसको मेकअप कोई काम दिया जाए और उसे कहा जाए पास कर ले। लेकिन ये जो स्टूडेंट लेवल की CQI है ये की जा सकती है, थ्योरेटिकली की जा सकती है, लेकिन ये बड़ी मुश्किल है इसको मेंटेन करना। नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स दे डोंट डू CQI एट स्टूडेंट लेवल, दे that's ओनली the डू point, sir. CQI एट कोहॉर्ट लेवल। Yes, लेकिन right, अगर sir. कोई That's the इंस्टीट्यूट point. करता है, कोई इंस्टीट्यूट करता है स्टूडेंट लेवल पे, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता आप गलत कर रहे हो। ओके जी, ठीक हो गया। दिस इज आई मीन ऑल फ्रॉम माय साइड। सो आई Okay, मीन thank अब ये एवेल्यूएटर पे डिपेंड करता है, बट आई थिंक यू शुड गिव अ रिबटल रिजॉइंडर दें कि जी दिस इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, वी आर डूइंग CQI एट कोहॉर्ट लेवल। इफ समवन इंसिस्ट, आई अज्यूम कि कोई भी इंसिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए आपके पास इनटेक अगर लेट्स से हमारे पास इनटेक यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स की है, राइट, वी डोंट डू दिस बाय द वे एट स्टूडेंट लेवल। हमारे 200 स्टूडेंट में से अगर आपके लेट्स से 150 स्टूडेंट जो हैं वो एक CLO में, या 80-90 चले KP अटेन हो गया सपोज करें कोहॉर्ट लेवल पे, 80-90 स्टूडेंट्स CLO 1 में फेल हो गए सपोज करें, तो वो कोर्स ओवरऑल तो पास कर गए। अगर सपोज करें वो ओवरऑल कोर्स पास कर गए और CLO में फेल हो गए, तो 80-90 स्टूडेंट्स को दोबारा बुला के उनसे एक एक से असाइनमेंट लेना इट्स अ कम्बरसम जॉब एंड इट्स नॉट मैंडेटरी। you. Yes, yes. हाँ, अगर स्टूडेंट का कोर्स फेल हो गया तो ऑटोमेटिकली CQI हो जाएगी, स्टूडेंट की दोबारा कोर्स पढ़ेगा तो, सही है। राइट ठीक जी। हो गया। Yeah, I got the point, sir. अच्छा, last question, it's a simple one. Let's suppose I'm talking about third semester. अब उसमें मुझे कोहॉर्ट लेवल पे CQI परफॉर्म करवाना है, क्योंकि वही सेम सेमेस्टर दोबारा रिपीट होगा। अब मुझे कोर्स में चेंजेस करवानी है। अगर उसी 6 मंथ्स में एकेडमिक काउंसिल नहीं हो रही है तो ये कोर्स अप्रूव कराने में तो टाइम लगता है। तो दैट्स द मेन इशू। ओके ओके, देखें यहाँ पे मैंने करेक्टिव एक्शंस में जो है ना, आपको देखें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है स्लाइड में सर, एज लास्ट रिजॉर्ट। ठीक हो गया, ठीक है। देखें बेसिकली करिकुलम की रिवीजन पे, क्योंकि हमारी जो स्पेशल बॉडीज हैं उनमें करिकुलम रिवीजन का इख्तियार जो है वो एकेडमिक काउंसिल का, एकेडमिक काउंसिल रेगुलरली नहीं होती, सही हो गया। ठीक है। अब आप उससे पहले वाले करेक्टिव एक्शन लेके देखें ना, जी सर। आप और बहुत सारे करेक्टिव एक्शन, आई होप कि उन करेक्टिव एक्शन से आपकी CQI हो जाएगी, और वो करेक्टिव एक्शन के लिए आपको एकेडमिक काउंसिल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया, बिल्कुल। राइट। अगर आपको जाना है किसी सूरत में तो देखें, एक कोर्स जो है हमारे यहाँ जो सिस्टम है, एक कोर्स साल बाद ऑफर होगा ना, यानी एक कोर्स आपने थर्ड में पढ़ाया तो वो कोर्स अगले साल थर्ड में आएगा ना, बिल्कुल तो साल आपके पास है ना। सही हो गया सर, लेकिन लेकिन करिकुलम की रिवीजन आप फौरन देखिए, आपने पता लगा कि API मीट नहीं, आपने करिकुलम रिवाइज करना, इस तरह नहीं करना। आपने और बहुत सारे तरीके हैं, आप देखें असेसमेंट में, आप उस CLO में देखें फॉर इंस्टेंस, आप देखें कि यार ये टॉपिक मुश्किल थे तो मैंने इसको 2 वीक्स पढ़ाया है, तो मैं इनको 3 वीक्स पढ़ाऊंगा या 4 वीक्स पढ़ाऊंगा इन टॉपिक्स को। तो ये भी एक CQI है ना, एग्जांपल्स ज्यादा दे दें टॉपिक्स की क्लास के अंदर, ये भी एक CQI है। असेसमेंट क्विजेस बढ़ा दें, असाइनमेंट्स बढ़ा दें, ये भी एक CQI है। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू ACAD, तो उन चीजों को प्रेफर करें। यस सर, गॉट द पॉइंट। असल में सवाल ये इसलिए था क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ CLOs जो है उसमें कंजेशन हो जाती है टॉपिक्स की, तो उनको रिवाइज करना यही है कि हमारे पास थॉट ये होती है कि CLOs को मॉडिफाई कर ले ऑन अवर ऑन लेवल। दैट वाज द पॉइंट, बट एट द एंड आप सही कह रहे हैं कि रिव्यू CLO करें या उसमें जो मेथोडोलॉजी उसको चेंज कर सकें, दैट्स इजीएस्ट वे जी, वो कर सकते हैं। ओके, नहीं आपके क्वेश्चन से मैं ये समझाऊं कि आपने CLOs भी अप्रूव कराए हैं अपने एकेडमिक काउंसिल से। CLOs नहीं, वही सवाल है ना सर, एकेडमिक काउंसिल से हम अभी हमारे कैंपस में जाके वो भी कमेटी बनी है जो CLOs को मॉडिफाई कर सकती है। बिकॉज आई एम आल्सो एक्चुअली आई वांट टू क्लियर वन थिंग हियर, बिकॉज मोस्टली HODs आर देयर। पहले नहीं था, पहले हम एकेडमिक काउंसिल की तरफ वेट करते थे, मगर दिस हैज बीन अप्रूव्ड कि CLOs आप अपनी एंड पे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट इज द सिंपल। ओके देखें CLOs को कभी भी एक ऐड से अप्रूव नहीं कराना आपने। बिल्कुल सर, वही बात है। CLOs आप अपने लोकल लेवल, आपका जो एक्ट कहता है ना कि करिकुलम चेंज होना है एक ऐड से, उसी को रखें, जो एक्ट है, एक्ट की वायलेशन नहीं करनी। CLOs तो आप अपनी बॉडी से करवा लें, चेंज कराना है CQI की, तो CLO तो लोकल बॉडी से, बोर्ड ऑफ स्टडीज इज द बेस्ट है, राइट जी। जी सर, बिल्कुल, आई गॉट द पॉइंट। जी सर, बिल्कुल। Okay. थैंक यू। Let's move to next thing. So the summary is this: cohort level पे, I would suggest, if I mean
because it's a training kind of, so I can do suggestion that the evaluator suggestion नहीं देते हैं, we're not, लेकिन as do CQI at cohort level only to simplify the things. Do CQI at cohort level only to simplify the things. Student level CQI is not mandatory thing, so avoid this initially. I would say this one. But again, this is my recommendation. If you want to do student level CQI, nobody will stop you. Nobody will stop you to do CQI at student level. अगर आप मैनेज कर सकते हैं, राइट जी? ओके जी? जी मेरा लास्ट क्वेश्चन जी प्लीज गो अहेड. मैडम निमरा प्लीज आस्क क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर डूइंग वेल. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे पास आई एम फ्रॉम बेसिक साइंसेज डिपार्टमेंट, तो हम लोग एक्चुअली मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. तो लास्ट टाइम मैंने जैसे अप्लाइड कैलकुलस है सब्जेक्ट के टॉपिक्स बहुत होते हैं, तो कुछ जैसे आपने कहा कि कोई एक CLO है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने वो अचीव नहीं किया, KPI उसका अचीव नहीं किया. तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा है तो अगर वही चीज रिपीट हो रही है, व्हाट डज इट मीन कि हमें क्या करना चाहिए? या तो हमें मतलब सजेशंस हो सकती है ना इसके लिए कि जाहिर सी बात है एक बहुत लेंथी कोर्स है, इसके लिए 45 क्रेडिट आवर कम है, हमें या तो क्रेडिट आवर इंक्रीज करना चाहिए. एक तो होता है कि हमने जो है अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि आप क्विज़ेस स्टार्ट कर दें या फिर रिटन टेस्ट इंक्रीज कर दें, जिससे क्या होगा कि एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो वो प्रैक्टिस ही करेगा ना, तो जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेगा किसी क्लास टेस्ट के लिए, तो अगर हम क्लास टेस्ट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो फिर भी इंप्रूव किया जा सकता है. लेकिन अगर फिर भी वो चीज क्लियर नहीं हो रही है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मीन्स हम एट द एंड हम सजेशन ही दे सकते हैं ना कि या तो इस कोर्स में टॉपिक्स को कम किया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोर्स है जो कि 45 क्रेडिट आवर में पूरा नहीं हो सकता है. ओके ओके, गुड क्वेश्चन. देखिए बात यह है कि पहले आप अभी जैसे आपने कहा पहले वो करेक्टिव एक्शन लेके देखें, अगर नहीं होता तो करिकुलम रिवाइज करना भी एक सजेशन है. अगर आप समझते हैं कि जी ये करिकुलम रिवाइज, आप तो सजेशन देंगे ना टीचर, आपकी बॉडी जो है वो प्रूव करेगी तो आगे चलेगा ना. तो वो फिर ये है कि वो लेंथी प्रोसेस है, बट दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन. तो मैंने जैसे कहा कि HEC की गाइडलाइंस हैं, HEC की जरूरी है कि आपने 100% फॉलो करना है. अगर आप देखते हैं कि कंस्ट्रेंट ऐसी है तो यू कैन अमेंड इट, बट यू हैव टू अप्रूव इट फ्रॉम एकेडमिक काउंसिल. करिकुलम को एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव होना पड़ेगा. ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. Okay, let's move next. So then CQI at PLO level. अब PLO level पे CQI जो है उसके इनपुट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? तो कोर्स लेवल PLO attainment report, final year project, internship feedback, exit surveys. So these are the documents, various documents which are done. Now as far as semester level PLO is concerned, attainment is concerned, आप for example in a certain semester आपके 4 कोर्सेज से PLO 1 आ रहा है, तो अब वो PLO 1 हर कोर्स से 1-to-1 मैपिंग है, तो फिर अब चारों कोर्सेज का PLO जो है वो एड अप होगा तो आपकी सेमेस्टर लेवल PLO अटेनमेंट निकलेगी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ CLO अटेनमेंट रिपोर्ट you can do two things. Now here basically you have to do CQI at student level as well as at cohort level. Both are required. इधर ऑप्शन कोई नहीं है, because PLO is something which is written clearly in manual that it should be implemented CQI. So student level पे what you can do is you can advise the students. If that PLO is not met by student, attained by student, so you can call him as an advisor. I mean, it depends upon your SOP, whatever it is, but advisor should, respective advisor or respective mentor should call him and discuss the attainments and then look for the course which will be offered in next semester in the relevant PLO in which student has failed, and then advise him to focus more, to work more on that PLO which is being offered in next semester, so that cumulative attainment can go above 50%. So this is a student level attainment, and this advice should be in written form. This advice should be in written form. So this is what we call student level PLO CQI. But suppose that at the time of graduation, if student did not pass some PLO, now there is no next semester. So what to do then? Then you have to do the makeup. You have to find out the course in which student's performance is let's say worse, or set of courses, and then you have to give the makeup for attainment of that PLO. So this is done at the time of graduation if student do not attain that respective PLO. Now as far as cohort level CQI PLO is concerned, so again you have to measure the KPI. If you have one-to-one PLO CLO mapping, then it's not a big difficult now. So more or less corrective actions would be very similar, but one thing which you can do is that you can also suggest infrastructure improvement. So this is something which is there, that
attainment is, corrective action will be invoked in case of PLO at cohort level, and again that corrective action will be again implemented at the next time. कोहॉर्ट लेवल पे रन टाइम पे कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती कोई चीज, तो कोहॉर्ट लेवल पे नेक्स्ट टाइम ही इंप्लीमेंट होगी. So these are possible corrective actions. KPIs for PLOs, reassessment of courses related to PLOs, PLO remapping. So I mean these are not the only possible. These are some possible corrective actions. You can devise your additional corrective actions too. Then comes the third CQI comes at PO level. Now this is a little bit different. Why it is different? Because it is mainly only indirectly assessed. You don't have direct assessment in this case. And generally employee survey and alumni survey is used, and then yearly you will collect that data and then you will imply the CQI for it. Again, if you have defined 2 years after graduation, 5 years, तो implement आप कब करेंगे? 5 years के बाद हर साल करेंगे. Let's say आपका एक बैच 2022 में ग्रेजुएट होता है, तो आप 2027 के बाद 5 years डिफाइन किया, तो हर साल आपका बैच ग्रेजुएट होना शुरू हो जाएंगे. लेकिन इन ड्यूरिंग 5 years आपने सिस्टम इन प्लेस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आपने हर साल करते रहना है. प्रैक्टिकली सीक्यूआई के लिए आप 5 years के बाद करेंगे. So generally, KPI for indirect assessment is more than KPI for direct assessment. One can be 60%, but again, this is a my general statement. I mean, I have seen some institutes, they have same KPI for direct and indirect assessment, but practically speaking, I have observed that KPI is more for indirect assessment in comparison to direct assessment. So these are some corrective actions which can be done, and again, you have to designate the body which will be doing this CQI. So this is the overall process, summary of it: program design, assessment, CQI. So these are the three processes which are there. Once we have designed the program, then assessment and CQI, and then corrective measures. And this is a loop. If you look at the bottom loop of the loop है. Look at my mouse cursor. So loop. Once designed, then there is a loop. So regular program improvement. So one objective is that our graduates attain PLOs, and second is we can have a regular program improvement through implementation of corrective actions. Now let's move to CEP. Now CEP is one of the core things which should be implemented, and normally students are given FYDPs in the CEPs. You can also, FYDP is the one thing which can be done, but you can also give CEPs as a course project too. FYDP is a necessary thing. FYDP must be considered as a CEP, but you can also give course projects as CEPs. अब basically CEP के attributes क्या हैं? So there are certain characteristics which are defined in the manual. These are certain characteristics which are defined in the manual, and this is a table, this is a slide, which is slide number 27. I'm here, and this is taken from the manual. So you can see there is a table given in it, and you can do this. Now look at this. Preamble says that your CEP should have some or all of the characteristics below. So what are those characteristics? Range of conflicting assignment requirements, depth of analysis should be there, depth of knowledge, familiarity of issues, extent of applicable codes, extent of stakeholders, and consequences, and interdependence. So again, normally we think that ये तमाम होना जरूरी है CEP में. It's not like this. Some से भी काम चल जाएगा. 2 or 3 भी अगर आपके CEP के अंदर हैं, so it will be considered as CEP, because manual clearly says some, ideally all, you can do a project, or you can have a FYDP which maps to all these. It's good, it's not bad. But again, there is a provision that some of them can also be used for defining CEP's characteristics. So once you have CEP, please consider them while defining or formulating a CEP, that it should target at least some of them. Some of them means at least 2 or 3. I mean, this is a sum is given and some is not defined here. But again, best practice is being used. So this is an important thing which you need to keep in this. So the second thing is that FYDP is one of the CEP, considered as CEP, but one should designate some courses in which CEP should be given. Then there is one more thing, PBLs, problem-based learning. Now, this is something for which there is no definition given in the manual. The manual only says that PBL should be given.
So there is one author, Dush et al. In 2001. They have defined this PBL. So I'll share the definition with you. What is PBL? So PBL is a teaching method in which real-world problems are used as vehicle to promote student learning of concepts, as opposed to direct presentation of facts and concepts. So you can give an example, real-world problem, and map it to your course, and this will motivate the students for learning. So what is the benefit of it? Development of critical thinking skills, problem solving abilities, and communication skills, and provide opportunity for students to work in groups, finding, evaluation, research materials, and lifelong learning. Now, what are the characteristics of good PBL? So, any subject area can be adopted to PBL with little creativity. So, some good characteristics of PBL are: the problem must motivate students to seek a deeper understanding of concepts. ऐसी प्रॉब्लम आपने बनानी है, एक स्टोरी बिल्ड करनी है जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे कि वो उसको अंडरस्टैंड करें, और प्रॉब्लम should require students to make reasoned decisions and defend them. And there should be incorporate objectives also. ये ना हो कि प्रॉब्लम के अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं है, करना क्या है. And then the problem PBL should be related to your course or previous courses. Some previous courses. ये नहीं है कि आपने एक चीज पढ़ाई नहीं है और उससे रिलेटेड PBL आप देना शुरू कर दें. And if you are using it in a group project, आपकी कम्प्लेक्सिटी इतनी होनी चाहिए ग्रुप में हो सके. It's not like this कि स्टूडेंट एक अकेला कर सकता है और आपने 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के उसको दे दिया. It's not like this. So this is another thing. अगर multi-stage project है, तो initial steps of the problem can be used as open-ended and engaging them to draw students into the problem. So these are the some characteristics. I'll give you a reference at the end also, so that you can look at this research paper. So it gives you a good definition of PBL. Now, open-ended labs. So normal labs are guided labs. We call them as guided labs. That our instructor basically gives the instructions how to conduct an experiment, and after giving the instructions and tell them the respective steps, how the experiment can be performed. But in case of open-ended lab, there are no guidelines. Instead of merely following guidelines, students are given freedom to develop their own experiments. Means that you give a title and then students are freedom, no guidelines. So in this way, students can be able to think critically and also provide a solution out of the box. So this is something which is there, that students will be devising their own strategies and back them with explanation, theory, and logical justification. So teacher may give a student project with the purpose and not the procedure. A project भी open-ended के तौर पे दे सकते हैं, experiment भी हो सकता है, project भी हो सकता है. Okay जी. Next is SDG. Can you see this slide? SDG. जी सर, बिल्कुल क्लियर. Okay. Now in 2015, history is this: world leaders, they developed these 17 SDGs, Sustainable Development Goals, to create a better world by 2020. And this is being created under the umbrella of United Nations, and Pakistan has also adopted these SDGs. So what are those SDGs? These are the 17 SDGs which you are seeing here. So they can be categorized into 5 groups. The first group is people, related to people. So the people means no poverty, zero hunger, good health, well-being, quality education, gender equality, and you can, clean water and sanitation. So this is related to people. These SDGs will improve the quality of life at individual level to the people. Then second group is related to SDG 7 to 12 are related to prosperity. That if these are attained, then there will be a prosperity in the society or in the nation. And then the third group is related to environment, climate action, life below water, and life on land. This is the third group. The fourth group is related to SDG number 16 is related to peace. And then fifth group is only having a one SDG, so partnerships. So in this way, you can divide these SDGs into 5 groups. So these groups are not universal. This is references from a one training given to us by foreign evaluator, and that basically sources his division, and so that's why I'm presenting it here. So there is a reference given at the end. Now, how to connect these SDGs to your FYDP? So this is an important thing. So if you look at this slide, so SDG goals, again, people, prosperity. SDG 1, 2, 3, 4, 5, 6 are related to people, society. SDG 7, 8, 9, 10 related to prosperity, जो आपकी economy से भी related है. And SDG 13, 14 is also related to planet, environment, and 16 is peace, and 17 is partnership. So the peace says that
our basically projects should map to SDGs. So where we can target, which SDGs which can target as engineers. So let's have a look on it. So goal 6, for example, clean water and sanitation is one of the target which can be given, and we can give the FDP, FYDP related to it if it can be done. So this is one of the goals which can be done. Then another SDG which can be taken is affordable and clean energy. So FYDP is related to affordable and clean energy can be given. Then industry, innovation and infrastructure. So this is a big SDG in which I think electrical engineering department can give FYDPs, designing a industrialization for inclusive and sustainable, foster innovation, creating strong and resilient infrastructure. Then sustainable cities and communication. This is another thing that one can target. And then as a result, you can see that there can be integrated engineering solution that provide infrastructure, sustainable energy, access to latest communication technologies, and bridging divide like IoT, 3D, and AI, artificial intelligence. So it's not necessary that all these SDGs should be mapped to every project. A single or two SDGs can also be targeted for each project. So it's not necessary again that every project is for sustainable and clean energy. It's not like that. Or every project is related to this thing. So different SDGs can be mapped to different basically projects. So now I'm coming almost to the conclusion of my presentation, so that we can have a remaining 30 minutes for question and answer session. So important points with respect to 2019 manual, that FYDP should encompass SDGs. So this is the new thing which is done. FYDP should encompass SDGs. And this is another thing, the institutional quality management system through institutional ISO. Then PLO's KPI should be at least 50%. Then community services. This is another thing, that program is inculcating community services or not. And knowledge profiles. So I have already discussed this. So these are some salient points which are new in comparison to 2014 manual. So they should be considered while implementing OBE. Now at the end, I would like to share some. So we have deficiency, little bit of evaluator's perspective. We have deficiency, we have weakness, we have concern, and we have buyer compliance, and there is OFI, opportunity for improvement. So let's define them. Normally, sometimes we think that weakness is something more serious than deficiency. But let me tell you that deficiency is the most serious one. Then comes weakness, then comes concern, and then OFI, and then compliance. Okay, Y is for compliance. So let's define deficiency. So deficiency means a criteria, policy, or procedure either does not exist or in the elementary stage. So evaluator basically will be judging these things, and on the basis of it, it can mark deficiency if in his understanding criteria or policy is not there or it is in elementary stage. And compliance is required before next accreditation visit. Then next is weakness. Again, criteria, I will not repeat them. Lacks strength of compliance, leading to compromised quality of program. So policy or procedure is there, but strength of compliance is not there. So corrective measure is required to strengthen the compliance prior to next review. This is called weakness. And then we have a concern, that policy, procedure, criteria is there, is in compliance broadly, but require improvement. And potential exists, KG, in future, it may go to the non-compliance. So this is what we call concern. And OFI, opportunity for improvement, that criteria, policy, or procedure is in compliance, but there is a suggestion. You can consider it as a suggestion, but would be further strengthened if suggested improvements are incorporated. And compliance means Y means that satisfactorily meets the criteria, policy, or procedure. So this is something which is there. So these are the definitions. As a faculty, we should, as a program team of your OB, they should have idea about it, and they should also have idea about rubrics.
The rubrics are easily available, evaluative rubrics from PC website. You can download them, and then you can have a better understanding when evaluation will be done. So by this, we conclude presentation. My presentation. These are some references at the end. Now, house is open for questions. So if you have any questions, you are most welcome. So last 30 minutes I have reserved for questions so that I can answer your questions. You please go ahead. If anyone has questions, they can ask, please. Ji, Madam Nimra, you can ask questions. And Rafiq Sahab, you can also ask questions. So feel free to ask questions. Feel free to ask questions. I mean, it will not only clear your concepts but also clear your colleagues' concepts too. Sir, Dr. here again. जी please. Sir, I have one question. हमारे यहाँ जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट की वेटेज गिवन होती है, फॉर एग्जांपल एट माइनस टी 80% फॉर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट असेसमेंट. जी please go ahead. हाँ सर, मैं असेसमेंट की वेटेज के लिए सवाल करना चाह रहा था. डायरेक्ट असेसमेंट पे 80% गिवन है और इनडायरेक्ट पे 20% गिवन है. आप इनडायरेक्ट असेसमेंट को ओवरऑल एक मिनट डॉक्टर साहब, could you please elaborate 80-20 क्या है? मतलब अगर हम ओवरऑल असेसमेंट कर. Can you hear me? Yes sir, we can hear you. Yes sir. Please go ahead. I was asking कि 80-20 की फिगर कहाँ से आई है? सर एक्चुअली मतलब आई गॉट अ मैनुअल जिसके में लिखा था कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट को एवेल्यूएट कर सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग अ फिगर 80% लेट्स सपोज डायरेक्ट पे ले रहे हैं और इनडायरेक्ट 20% ले रहे हैं. तो आप जो इनडायरेक्ट असेसमेंट उसको आप इनकॉर्पोरेट करते हैं एट द एंड ऑफ ग्रेजुएशन बैच के जो भी ओवरऑल एवोल्यूशन होती है, तो आप इनडायरेक्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं असेसमेंट ओवरऑल असेसमेंट में, अगर मैं बैच के ओवरऑल असेसमेंट करना चाहूँ. सवाल ये है सर. देखिए, पहली बात ये कि 80-20 की फिगर आपने पीसी मैनुअल में कहीं नहीं लिखी. पहली बात ये. हाँ तो आपके लिए जो बुक है ना, आप जिसपे रीबटल दे सकते हैं या रीजॉइंडर दे सकते हैं, वो आपका पीसी मैनुअल है. आई मीन इस तरह तो बहुत सारी आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी जिसमें 80-20 की बजाय 70-30 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है. तो प्लीज एक चीज तो ये है कि मेरा ओपिनियन है कि 80-20 इज नॉट अ यार्ड स्टिक. अब आपने सेकंड ये चीज पूछी. पहली बात ये कि आप डायरेक्ट असेसमेंट को इनडायरेक्ट असेसमेंट के साथ मिक्स नहीं कर सकते. ठीक हो गया. आपने अगर सीक्यूआई करनी है तो आपने ओवरऑल अगर तो कोर्स लेवल पे करनी है तो आपने रिजल्ट्स को दोनों को सेपरेटली देखना है और सेपरेटली देख के आपने ये डिसीजन लेना है कि क्या सीक्यूआई की जरूरत है कि नहीं है. अब बाकी ये आप जो आप कह रहे हैं कि आप एग्जांपल दें मुझे कि आपका मकसद क्या है कि किस सिनेरियो में आप जो है वो ये बात कर रहे हैं. कोई ओवरऑल असेसमेंट में ये जो है ना, मुझे इस चीज को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल किस सिनेरियो में आप बात कर रहे हैं. जी मैं क्लैरिफाई करता हूँ. आप जैसे भी बताया हमें कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कंबाइन नहीं कर सकते. आप इस तरह कह रहे हैं कि भी उनकी डायरेक्ट असेसमेंट सेपरेट एवोल्यूशन होगी, इनडायरेक्ट की जो भी है, मतलब लेट्स सपोज हम इनडायरेक्ट लेते हैं एग्जिट सर्वे पे ले सकते हैं या एम्प्लॉयर और एलुमनाई सर्वे पे, तो उनकी असेसमेंट की परसेंटेज सेपरेट होती है. नहीं देखिए, जहां तक पीओ की बात है ना, पीओ में तो डायरेक्ट असेसमेंट है ही नहीं है. जी उसमें डायरेक्ट जी है ही नहीं है. और एग्जिट सर्वे जो है लास्ट में आप काम करते हैं. जी एग्जिट सर्वे जो आप करते हैं वो पीएलओ के लिए करते हैं ना. जी वहां पे आप ये कह सकते हैं पीएलओ. देखिए, अब आपकी एक आगे आपकी थ्रू सीएलओ आपने पीएलओ की असेसमेंट की, वो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट है लेकिन वो थ्रू सीएलओ के थ्रू आ गई. ये जो एग्जिट सर्वे है एडिशनल टूल है जो आपको ये बताता है कि स्टूडेंट क्या फील कर रहे हैं. ये एग्जिट सर्वे स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन के वो पीएलओ स्टेटमेंट के बारे में क्या व्यू दे रहे हैं. ठीक है ना. मसलन आप लेट्स से आपका मैं एग्जांपल दूं, आपका अगर कोई स्टूडेंट है वो कहते हैं कि जी पीएलओ 1 उसका फेल हो गया, पीएलओ 1 उसका फेल हो गया, उसका कम्युलेटिव पीएलओ 1 50% नहीं है. डायरेक्ट असेसमेंट आपको ये रिजल्ट बता रहा है, यानी थ्रू क्विज़ असाइनमेंट जो भी आपके पास आया. अब आपने सर्वे करवाया तो वही स्टूडेंट जो है वो कह रहा है कि जी मैं तो अटेंड कर गया हूं, फिर क्या करेंगे. तो सर सवाल तो ये, अब आपको मैं एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ. कोहार्ट केपीआई पीएलओ लेट्स सपोज पी इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव 0.2 into ARB. ये हमारे एकेडमिक काउंसिल में एक अप्रूव्ड हमारी लास्ट स्टेटमेंट है. तभी आपसे पूछ रहा सवाल कि आप 20% लेते हैं इनडायरेक्ट का और 80% लेते हैं आप डायरेक्ट का, तो ओवरऑल इट शुड बी ग्रेटर देन 50%. तभी मैंने पहले सवाल इसलिए किया कि 80 + 20 हमारी एकेडमिक काउंसिल का अप्रूव्ड पीएलओ सीक्यू प्रोसेस है, जिसमें एज एवल्यूटर जो भी है उसने जब ये चार्ट देखा तो सवाल पहला यही किया कि आप इनडायरेक्ट को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं. तभी मैंने सवाल आपसे किया कि क्या आपके पास सिस्टम है जिसमें आप इनडायरेक्ट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं आप ओवरऑल. देखिए
ये आपका अपना सिस्टम है, इस तरह की कोई चीज पीईसी मैनुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये अप्रूव पीएलओसी के प्रोसेस है, तभी सवाल ठीक है, किया है। आप देखें जो सिस्टम है ना वो रिस्पेक्ट करता है सिस्टम इंस्टीट्यूट के विजडम का, लेकिन जब आप एक नई चीज डिवाइस करेंगे तो जो बर्डन होगा उसको प्रूव करने का वो इंस्टीट्यूट पे ही होगा या डिपार्टमेंट पे होगा, क्योंकि आप खुद कर रहे हो ना। आपको एक चीज मैनुअल में नहीं दी, आप एक चीज कर रहे हो तो फिर उसका एविडेंस आपको ही देना है। ठीक है सर, तो तभी सवाल आपके पास ये नहीं है, मतलब इनकॉर्पोरेशन नहीं करते इनडायरेक्ट की आप ओवरऑल मतलब असेसमेंट में? नहीं, मैं देखें, मैं अगेन इनकॉर्पोरेशन से मुराद है, हम तो सीक्यूआई करेंगे ना। हम अगर आप पीएलओ की एग्जांपल दे रहे हैं, मैं एग्जैक्ट स्टूडेंट का लूंगा, डाटा लूंगा और मैं देखूंगा कि स्टूडेंट्स की फीलिंग क्या है। अगर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी हम जो है वो पीएलओ हमें अटेंड नहीं हुए, लेट्स से 50%, नॉर्मली होता नहीं है वैसे, मैं आपको बताऊं, लेकिन लेट्स से वो आपने केपीआई डिफाइन कर दी एग्जैक्ट सर्वे के लिए 50% ही कर दिया आपने, 50% से ज्यादा स्टूडेंट जब वो ये कहना शुरू हो जाएंगे कि हमें तो पीएलओ अटेंड नहीं हुए, तो फिर हम उसका करेक्टिव एक्शन को लेंगे। आपका जो डाटा है वो तो दिखा रहा है कि सारों के अटेंड होंगे, यही पॉसिबिलिटी है ना, यही हो सकता बिल्कुल। है। तो फिर आप उस पर कोई करेक्टिव एक्शन लेंगे ना, लेकिन उनको आप इसका प्रोसीजर को डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे अगर सर्वे में अगर रिजल्ट खराब आ जाते हैं, और एक्चुअली जो आपने थ्रू सीएलओ असेस किया वो ठीक है। ठीक है सर, अंडरस्टूड। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, गुड क्वेश्चन बाय द वे, गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू। Assalamu alaikum. Sir, as per your experience, can you differentiate PBL and CEP? ओके, सो अगेन ओके, देखिए सीपी की कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए, राइट? नाउ एज पर माय एक्सपीरियंस वन कैन डिवाइड, देखिए है ना, इसका कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सीपी के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं करेंगे तो सीधी सीधी डेफिशिएंसी लग जाएगी। पीबीएल और सीपी में जो डेडिकेट फर्क है, वन कैन डिवाइस आप पीबीएल इन द फॉर्म ऑफ सीपी। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ मैप करना है ना आपने। अगर आप एक ऐसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेके आते हैं और उसके अंदर सीपी के भी कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, वो पीबीएल भी है और सीपी भी है। लेकिन अब बात चीजें ऐसी होती है जिसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ मैप करना पॉसिबल नहीं होता। आप थ्योरेटिकल नेचर देते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, रिसर्च करते हैं और कुछ इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो सब सीपी होगा। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर। और पीपीएल जो है, Okay, sir. ऐसे हम कह सकते हैं कि several PBL problem based learning are the inputs of CEP. अब देखिए पीबीएल भी लर्निंग जो है वो आपको सीपी को स्ट्रेंथन तो करेगी, कहने को तो ख्याल है स्टेटमेंट देने से, क्योंकि जब स्टेट मैनुअल नहीं डिफाइन कर रहा तो फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है ना। मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई, आपको जो और डेफिनेशन ढूंढ के उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पीबीएल फॉर एग्जांपल, पीबीएल एक असाइनमेंट भी हो सकती है। आप एंड प्रॉब्लम को इस तरह मॉडिफाई कर लें कि उसके अंदर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की टच डाल के तो आप एक असाइनमेंट के तौर पर दे सकते हैं पीबीएल, लेकिन वो फिर सीपी नहीं होगी, उसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे तो एज ए आई मीन देयर इज नो फिक्स्ड फार्मूला, यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है कि मैं कहूंगा कि इस सूरत में हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हो सकता है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, एज ए प्रिलिमिनरीली इनिशियली आप पीबीएल्स को कुछ सेपरेट जो है वो कोर्सेज में रख लें और उनका कंप्लेक्सिटी लेवल, सीपी का कंप्लेक्सिटी लेवल सबसे ज्यादा है। पीबीएल तो अपना कंप्लेक्सिटी लेवल ही आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस कंप्लेक्सिटी लेवल पे जाना चाहते हैं पीबीएल में। मसलन एक एंड प्रॉब्लम को आप मॉडिफाई करें और उसको इंप्लीमेंट करा दें तो वो पीबीएल बन जाएगा। रियल वर्ल्ड के साथ मैप करके एक स्टोरी बिल्ड करके उस वर्ड को बता दें तो वो एक पीबीएल बन जाएगा, राइट जी? ठीक है सर, बेहतर। अगर हम कह सकते हैं कि CEP जो है मल्टीपल CEPs can make FIP. No. It's not like this. FYDP is a separate thing. FYDP की definition is given in the manual. Please read that manual definition thoroughly from manual. But this statement is not correct. CEPs, FYDP can be considered as CEP and it should be considered as CEP. But इसका जो level है वो बहुत ज्यादा है और इसमें definitions आपको वो सारी incorporate होने चाहिए। कोर्स के अंदर भी सीपी दी जा सकती है, प्रोवाइडेड कि वो जो पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो रहे हैं। लेकिन अब आप अगर आप मैं ये स्टेटमेंट से ये लूं कि अगर आपके सेवरल सीपीज एक एफआईडीपी के बराबर है तो फिर तो एफआईडीपी की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके 4 सीपीज करके एफआईडीपी के इक्विवेलेंट हो गया तो एफआईडीपी फिर देने की जरूरत ही नहीं बनेगी। इसलिए इस स्टेटमेंट को आप रहने दें, वो एक अपॉर्चुनिटीज हैं एफआईडीपी के अलावा और जो कोर्सेज में सीपीज को करने की, राइट? This is Okay, sir. Thank you. अस्सलाम सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सर, जब स्टूडेंट को मिनी डिजाइन प्रोजेक्ट देते हैं तो क्या उसको एज अ सीईपी टास्क दे सकते हैं?
नहीं, उसको सीईपी देखिए, प्रोजेक्ट को आप सीईपी कह सकते हैं अगर वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो जो मैंने अभी आपको दिखाया वो उसको फुलफिल करता है, लेकिन आप इन्हीं प्रोजेक्ट को बिल्कुल दिया जा सकता है अगर देना चाहे तो, प्रोवाइडेड कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। सो मैनुअल हैज लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आप प्रोजेक्ट को एज ए ओपन एंडेड लैब भी दे सकते हैं, ये डिपेंड्स। Sir, we have one सीईपी के other बारे question. में सीईपी के कैरेक्टरिस्टिक्स मैनुअल में गिवन है, राइट जी? Okay, sir, we have one PBL के हवाले से है कि सेपरेटली असाइन होना चाहिए या इनको ग्रुप में देना चाहिए PBL? देखिए अगेन डॉक्टर साहब, आई मीन देयर इज नो फार्मूला फॉर इट, फ्रैंकली स्पीकिंग इट डिपेंड्स। एज ए इंस्ट्रक्टर यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि उसका जो कम्प्लेक्सिटी लेवल है कितना है। अगर आप समझते हैं कि एक स्टूडेंट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, इसके लिए एडिशनल स्टूडेंट की जरूरत नहीं है, तो गिव इट इन अ स्टूडेंट। अदरवाइज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि जी आपने सिर्फ स्टूडेंट लेवल पे देना, ग्रुप में नहीं देना, या ग्रुप में देना स्टूडेंट लेवल पे नहीं देना, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन इट, यू कैन गिव इट इन अ ग्रुप लेवल टू, but the volume of work should be of at par with that group. So, if you have any other questions, all participants are requested to ask a question if they have any. That's Sir, I have a question. I have just two short questions and it will be one line answer. Please, one by one, right? One by one. पहले का आंसर कर लो, मैं फिर सेकंड पूछना आपने। Thank you. one by Go one. ahead. So I want to understand mind of evaluator, ठीक है सर? अब पहले सवाल है कि OEL जो है should it be included in our lab journal or it should be separate thing, because ये सवाल करते हैं, it's a simple question. It should be Okay. our जी। देखें, OEL का मतलब है ये लैब्स में ही होगा। ठीक है। इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है आपकी? इंडिपेंडेंट से मुराद अभी किस तरह देंगे? फॉर इंस्टेंस अगर आपके ब्रांड में कोई है तो प्लीज गो अहेड। मैं इंडिपेंडेंट से दूंगा, इसे एग्जांपल दूंगा, क्योंकि लेट्स सपोज एक एवल्यूएटर मेरे पास है, उन्होंने कहा कि भाई आपका जो OEL है वो सेपरेट एक रिपोर्ट होनी चाहिए, या सेपरेट जो आपका मतलब एक प्रोजेक्ट बना के उसको आप OEL मेंशन कर दें। देखिए, टाइम जी सर। ओके आई गॉट दैट। देखें, लेकिन होगा तो किसी सब्जेक्ट का हिस्सा ना, किसी लैब सब्जेक्ट का हिस्सा होगा ना, रिपोर्ट तो सेपरेट होगी, रिपोर्ट तो सेपरेट होगी, इवन उसके रूब्रिक्स सेपरेट होंगे, ठीक है ना? आपको वो कहेंगे कि आपने एक्सपेरिमेंट के रूब्रिक्स OEL में यूज कर लिया, तो OEL में तो इंडिपेंडेंट होता है, तो आप कैसे रूब्रिक्स यूज कर सकते हैं? लेकिन रिपोर्ट तो होगी, उसकी सेपरेट रिपोर्ट तो होगी, सेपरेट। अभी क्वेश्चन कंप्लीट करना था, क्योंकि पहले हमने लेट्स सपोज रूब्रिक सेपरेट बनाया, उसको लैब जर्नल में हमने मेंशन नहीं किया। So at that time it was observation that it should be the part of your lab manual, 15th objective. Then again in the next semester, next visit, there is something else. Maybe no, it should be a separate report. So these are the two again means contradicting statements. Should we include it in journal or not? Okay, देखें again पहली बात ये कि evaluator जो है ना, okay, this is my opinion again. This is my opinion. देखें, it's not necessary that you know if something is not given in manual, so that is not something आप उसमें best practices की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है? पहली चीज ये है, और लॉजिकली एविडेंस आप जो चीज कर रहे हो उसका एविडेंस होना चाहिए, पहली सेकंड चीज ये है ना। अब बेस्ट प्रैक्टिस की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि एवेल्युएटर तो फिर देयर इज अ डाइवर्सिटी इन इट, राइट? बट अगेन let me tell you that during trainings it is being told to us that you should not give any suggestion, you should point out the issue and that's all. तो सजेशन में प्रॉब्लम यही आती है जो अब आप बता रहे हैं। तो सजेशन में ये होता है कि पहली बात ये कि सजेशन आपको लिख के दी गई कि जुबानी कहा गया, ये Because it is considered as a concern later on. Okay, OEL are not considered correctly. That's why I was asking the question. Okay. Suggestion considered a concern. It is a written form. So now I'll tell you best practice. Basically, you have to mention in a lab course plan that when you will give OEL and what is the topic of OEL as a separate slot. कि OEL अगर आप दे रहे हैं तो लैब नंबर 12 में दे रहे हैं, ये OEL का टाइटल है, ठीक है? अब उसकी अलग रिपोर्ट होगी, और रिपोर्ट जाहिर है कि आपने रिपोर्ट मेंटेन करनी है, लैब उस कोर्स से रेलेवेंट लैब रिकॉर्ड में हिस्सा बनेगी, अब आप उसके सेपरेट रूब्रिक्स भी होंगे। तो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, दिस इज व्हाट आई कैन से। Got the point now. One last question. Because I have opened this manual, it's written कि भाई आपका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए 50% है, उसके बाद आप उसको ग्रेजुअली इंप्रूव करेंगे। अब लेट्स सपोज आई फॉर माय डिपार्टमेंट पहले 50, देन फॉर नेक्स्ट 5 बैचेस इट शुड बी 60%, फॉर देन इट शुड बी 70%। अब ये जो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है, अब इसका कोई क्राइटेरिया है या बस मेंशन कर दे कि 50-60% बढ़ता जाए खुद ब खुद? देखिए आप कैसे 50 से 60 पे जंप कर गए, पहले तो मुझे ये बताइए। जी बिल्कुल। कहाँ लिखा है कि 50 से 60 पे जंप करना है?
Because it's written in the statement that minimum it should be 50%. Later on, as the program progresses through its evolution, it is expected that minimum threshold value would be subsequently raised. अब ये raising point है, इसका criteria क्या? नहीं देखें, जितना लिखा है उतने भी रहना। रेज का मतलब है मैं अगर उसको 53% कर दूं तो फिर रेज होगी, फुलफिल हो गया। कंसर्न रिटर्न है कि आपको बढ़ाना चाहिए। नहीं देखिए, इंस्टीट्यूट को बहुत इंडिपेंडेंस दी गई, आप इस इंडिपेंडेंस को क्यों खत्म करना चाहते हैं? अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी आजादी को क्यों खत्म करवाना चाहते हैं? आप देखिए, आपको कहा कि बस रेज करनी है, आप कहेंगे रेज कर दी, 53% कर दी। हो गया सर, ठीक हो गया। आप अपनी इंडिपेंडेंस को खत्म मत कराएं, इस तरह के सजेशन ना दें। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये था कि यूजुअली ये कहा जाता है कि अफेक्टिव डोमेन जो है इन ऑल लैब्स की टेक्सोनॉमी लेवल में अफेक्टिव डोमेन शो करें। ओके, तो इसकी मैनुअल के लिहाज से इसकी कितनी जो है वो जरूरत है, ये क्वेश्चन है। देखिए इफेक्टिव डोमेन आप कहाँ मेजर कर सकते हैं? नॉर्मली इस ऑल लैब्स में कुछ बाइंडिंग नहीं है। अगेन आप देखें, एक चीज होती है कि लैब के अंदर एक चीज हो रही है, आप मेजर नहीं कर रहे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। देखिए, लेकिन नॉर्मली लैब्स के अंदर इफेक्टिव डोमेन को मेजर किया जाता है। इसलिए मेजर किया जाता है कि स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करते हैं तो कम्युनिकेशन का इंस्ट्रक्टर बिहेवियर देख लेता है, फिर लैब रिपोर्ट आती है, उसमें कम्युनिकेशन आती है, उसमें वो इफेक्टिव जो एटीट्यूड उसका के जो उसका रिटर्न और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कैसे हैं, वो मेजर हो जाता है। तो नॉर्मली जो लैब्स के अंदर इफेक्टिव जो मेजर है, इफेक्टिव जो डोमेन है उसको मेजर किया जाता है। लेकिन इसके अलावा आप नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उसमें कहाँ से इफेक्टिव डोमेन तो नहीं मेजर होती ना। आपके कुछ कोर्सेज होते हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड है या कुछ इस तरह के रिलेटेड है, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, उसको में आप इफेक्टिव मेजर कर लेते हैं। तो अब अगेन देयर इज नो फार्मूला फॉर इट, बट नॉर्मली प्रैक्टिस इज देयर, लैब में होता है। अब अगर कोई लैब में हर लैब में ना करे तो मैं तो एज एन यूजुअल उसे नहीं मना करूंगा कि भाई आप हर लैब में क्यों नहीं कर रहे। लेकिन बेहतर यह है कि देखिए, आप ज्यादा जगहों से मेजर करेंगे ना तो आपका जो अटेनमेंट्स आएंगी ना, अब डेंजर क्या है, आप एक पीएलओ पीएलओ को भी मेजर कर रहे हैं, आप इफेक्टिव एटीट्यूड से जब मैप करेंगे तो पीएलओ से भी मेजर कर रहे हैं। आप अगर स्टूडेंट्स को 10 अपॉर्चुनिटीज देंगे पीएलओ को मेजर करने की तो उसका प्रोबेबिलिटी है कि वो अटेन करने में आसानी से अटेन कर लेगा। लेकिन अगर आप 2 अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को देते हैं, 3 अपॉर्चुनिटीज देते हैं तो स्टूडेंट को डिफिकल्ट होगा, आपको सीक्यूआई जो है वो फिर करनी पड़ेगी। तो इसलिए कोई फार्मूला तो नहीं है, लेकिन जनरली बेस्ट प्रैक्टिस ये लैब में मेजर किया जाता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं, हर लैब में ना मेजर करें, सर्टेन लैब्स में कर लें मेजर, को रैशनल बना के जी हम होता तो है, आपकी रिपोर्ट स्टूडेंट ने देनी है, तो इट्स अप टू यू। ओके, फर्दर मेरा क्वेश्चन रिलेटेड टू पीबीएल, ओईएल एंड सीईपी ही है। एक्चुअली हम लोग जो है सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, मींस सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, अप्लाइड न्यूमेरिकल मेथड्स है, इसमें एक्चुअली न्यूमेरिकल एनालिसिस ही आता है। तो इसमें हमें जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कि जब हमने 15 प्रैक्टिकल्स करवा लिए तो हम इसमें पीबीएल दें या ओईएल दें। ठीक है, ओईएल में आप कह रहे हैं कि या तो स्टूडेंट को एक न्यू प्रोजेक्ट जो है बनाना है, जाहिर सी बात है अगर मैथमेटिक्स फॉर्मुलेशन तो वो न्यू नहीं बना सकता। ठीक है, तो हमें इस चीज को प्रीफर करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हम जब कोर्स पढ़ा रहे होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है या डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो स्टूडेंट एक्चुअली क्वेश्चन उनका यही होता है कि मैडम आप पढ़ा तो रही हैं लेकिन हमारी फील्ड में इसका कहाँ यूज है। तो हम बताते हैं कि भाई यहाँ पे भी जो है सर्किट एनालिसिस के लिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज हो रही है, या फिर जो है इंटरपोलेशन कहाँ पे यूज हो रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड। तो हम उनकी फील्ड से रिलेटेड एप्लीकेशंस बता रहे होते हैं। मैडम तो अगर जो है अगर ठीक है, आई गॉट जी, योर अगर क्वेश्चन। तो मेरा जो मैं समझती हूँ कि जाहिर सी बात है एक स्टूडेंट जब एक जो है ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो मैं प्रिफर करती हूँ कि उनको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एनालिसिस हो जाए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम क्लास में एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हैं तो जो है हम बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं, फिर जो है वही आपकी वाली बात के जब हम उसको पीबीएल दें तो हम कोई ऐसी स्टोरी क्रिएट करें तो या तो वो स्टूडेंट जो है अकेला स्टूडेंट जो है कर सकता है, या फिर वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि उनकी एक्चुअली जो मेथड पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली उनकी फील्ड से रिलेटेड किस तरह से है और वो उसको लर्न तो कर रहा है, एटलीस्ट वो अडॉप्ट कर रहा है कि ये हमारी जो है किस तरह से हमारे प्रॉब्लम्स को ये मेथड सॉल्व कर रहा है। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू के न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमें पीबीएल देना चाहिए या फिर ओईएल देना चाहिए, तो मैं ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। देखिए बेटा, बात यह है कि पहली बात है कि ओईएल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में ओईएल लैब में होती है। पहली चीज के ध्यान में रखिएगा, ओपन एंडेड लैब्स हैं तो ये लैब्स के अंदर ही जाती है।
तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में तो लैब नहीं होती आपकी, राइट? नहीं सर, न्यूमेरिकल एनालिसिस में होती है लैब। न्यूमेरिकल एनालिसिस में होती है। तो देखिए जी सर। ये आपका अपना विजडम है, आप इस एज ए ना व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, और यू नो जस्ट माय सजेशन, इट्स अ नॉन बाइंडिंग, इट्स अप टू यू। आपने कुछ एक जॉइंट जो है ना फैकल्टी मीटिंग के बाद एक कुछ कोर्सेज डेजिग्नेट कर लें कि किसमें क्या देना है, तो उससे आपकी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक कोर्स में पीबीएल भी दे रहे हैं, ओईएल भी दे रहे हैं, या आप इस तरह कर रहे हैं कि जी एक सेमेस्टर में सीपी भी आ रहे हैं, स्टूडेंट ओवरबर्डन हो जाएगा। तो आपने नहीं सर, क्योंकि हमारा एक सपोर्टिंग सब्जेक्ट अप्लाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस ही होता है, जिसमें हमारे पास जो है लैब वर्क होता है, जिसमें जाहिर सी बात है प्रोग्रामिंग वगैरह होती है। तो वहां पे हमें ये होता है कि भाई जाहिर सी बात है न्यू मेथड तो डेवलप नहीं करेगा स्टूडेंट मैथमेटिक्स का, ठीक है। बिल्कुल ठीक तो है, हम ये कहते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अगर उसका 5 मार्क्स की जो भी हम देना चाह रहे हैं या 4 मार्क्स की, तो वो ग्रुप में हो या फिर इंडिविजुअली हो, तो वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इस तरह से होनी चाहिए कि आप स्टोरी क्रिएट करके या तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को असाइन करें या फिर इंडिविजुअली असाइन करें कि हाँ भाई इसको एनालाइज करके, इस स्टोरी को एनालाइज करके बताओ कि इसके इस पे ऊपर कौन सा मेथड बेस्ट सुटेबल है। तो सर ये भी तो एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, I just want to देखिए clear- अगेन आप मुझसे जो है ना ऑन द लाइटर रोड मेरे कहने से कुछ बहुत ज्यादा, लेकिन इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, यू कैन डू दैट। अब इट्स देखिए फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी चीज आप करें वो लॉजिकल हो, उसका एविडेंस मौजूद हो, और वो उसमें कोई वो एक जिसे कहते हैं ना बग ना हो, इशू ना हो, ठीक है। जी जी सर। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये है कि हम जो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं उसमें हम सीएलओ पीएलओ और टेक्सोनॉमी लेवल जो है हम उसमें डिज़ाइन करते हैं, पहले बीओएस से करवाते हैं, उसके बाद वो आगे जाती है हायर स्टैट्यूटरी बॉडीज में। उसमें नॉलेज प्रोफाइल मैंडेटरी है कि हम वो भी हर सीएलओ के साथ या कोर्स के साथ हम नॉलेज प्रोफाइल जो है वो मेंशन करें, मैंडेटरी है? देखें देखें देखें, आप पहली बात ये कि आप सीएलओ अप्रूव कराते हैं अपनी एकेडमिक काउंसिल से, बॉडी से, पहले ये बताएं मुझे। नहीं, जैसे हमने जो है वो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एकेडमिक काउंसिल जो है पहले करती थी सीएलओ, और इस वक्त जो हमारा करिकुलम चल रहा है वो मोस्टली वही है जो एकेडमिक काउंसिल ने अप्रूव किया। अब उन्होंने हमें मैंडेट दिया है कि आप अपने सीएलओस जो है वो खुद डिजाइन कर सकते हैं या उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब जब हमारे पास ये मैंडेट आ गया है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फैकल्टी हमारी जो है वो क्या नॉलेज प्रोफाइल भी उसमें मैंडेटरी ऐड करे? नहीं, तो नॉलेज प्रोफाइल के बगैर आपका करिकुलम तो ऐड नहीं हो सकता ना, लेकिन नॉलेज आपकी जो सारी थ्योरी है वो आपकी नॉलेज प्रोफाइल में जाएगी ना, तो आप नॉलेज प्रोफाइल के बगैर कैसे ये नहीं करा सकते हैं? मेरा आपसे ये कहूँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है। हाँ, मतलब हमारी जो ओल्ड हमारा जो करिकुलम था उसमें नॉलेज प्रोफाइल का कोई जिक्र नहीं था, जो एकेडमिक काउंसिल ने किया था उसमें नॉलेज प्रोफाइल का कोई पहली मेंशन बात नहीं था। नहीं, ये तो मैं इस पे मैं क्या कमेंट दूं, आपको तीनों जो प्रोफाइल्स है वो तीनों आएंगे, लेकिन नॉलेज प्रोफाइल आप डब्ल्यूकेएस की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ, WKS की एग्जैक्टली। देखिए डब्ल्यूकेएस जो है ना सिंपली ये है कि आपका आपने मैपिंग करके दिखाना है, आपका जो करिकुलम है उसको मैप करना है डिफरेंट नॉलेज प्रोफाइल्स पे, बस। एग्जैक्टली। इसमें इसमें अप्रूवल की तो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू इट। नहीं, एटलीस्ट जो हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज है उससे उसकी अप्रूवल से तो वो गुजरेगा ना। देखिए आप करा लें, आई मीन इफ यू कैन वांट टू डू, देखिए अगेन जब जब सर एक बड़ा क्वेश्चन है कि जिस वक्त हम जो है वो ऑनलाइन सार सबमिट करते हैं उसमें एक बकायदा फॉर्म है कि कोर्सेज की मैपिंग है नॉलेज प्रोफाइल से और पीएलओ से, तो वो तो हमें अप्रूव करानी होगी ना। नहीं आप देखिए अगेन मैपिंग तो करनी है, तो अप्रूव कराने की जरूरत है, करा लें। राइट, Okay, because we are running out of time, so I will take only one more question. 1 Yes. o'clock. ओके सर, वही क्वेश्चन के सीईपी एंड पीबीएल से रिलेटेड है कि किस सेमेस्टर से ये स्टार्ट होने चाहिए? Anyone wants to ask the last question? जी जी दोबारा रिपीट कीजिएगा। I didn't hear your question, so please repeat it again. क्वेश्चन ये है कि सीईपी और पीबीएल ये किस सेमेस्टर से स्टार्ट होने चाहिए, कोई इसकी हार्ड एंड फास्ट रूल है? गुड क्वेश्चन। देखिए सीईपी के अगर आप एट्रीब्यूट्स देखेंगे ना, सीईपी के एट्रीब्यूट्स पहले बात करता हूँ, तो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट को लिए सीईपी करना मुश्किल हो जाएगा, उसको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो तब ना। तो नॉर्मली अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में सीईपीज आते हैं, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में सीईपीज जो है वो नॉर्मली दिए जाते हैं, लेकिन अगेन देयर इज नो फार्मूला फॉर कोई सेकंड ईयर में कोई एक आध सीईपी देना चाहे तो दे दे। ठीक है सर, एंड देयर इज वन अदर थिंग, इज पीबीएल ओनली रिलेटेड टू थ्योरी एंड सीईपी ओनली रिलेटेड टू लैब्स? इज दिस आइडिया करेक्ट और ये मिक्स हो सकता है? देखिए मुझे एक बात बताएं, आप इंजीनियर बना रहे हैं, इंजीनियर बगैर थ्योरी के क्या बन सकता है? हाँ आप सही कह रहे हैं। टेक्नीशियन तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे ना टेक्नोलॉजी। देखें आप लैब में सीईपी देंगे तो, लेकिन वो थ्योरी के कॉन्सेप्ट तो फिर भी यूज करेगा,
उसको थ्योरी के बगैर वो कैसे सीईपी करेगा? तो इट्स अ मर्जर ऑफ थ्योरी एंड लैब, प्रैक्टिकल वर्क, नॉलेज एंड स्किल्स। क्या आप उसे कहीं पे भी करवा लें, थ्योरी में करवा लें, लैब में करवा लें, दोनों यूज होंगे, राइट जी? So by this we, I mean, because I have some other commitments, so again, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ज़्यादा अच्छा सेशन रहा और आई विश के वी विल इनवाइट यू अगेन इफ यू हैव सम टाइम, बिकॉज क्वेश्चंस अभी भी रहते हैं, कुछ बंद हो गए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड योर एक्सपर्टीज ऑन द फील्ड, सो एवरीवन हैज लर्न अ लॉट, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, आपकी आवाज कट गई, चले चलें, कैन यू हियर मी जी? यस सर, वी कैन। Okay, so thank you very much. Thank you. I mean, because it's a volunteer activity, it was a volunteer activity. So normally it's difficult to do this again and again. So, but anyhow, if someone has some question, I would be happy to answer through email or something like that. It's possible. We If it's will be possible. communicating, inshallah. But having said this thing, it would not be possible for me to review your processes or review your SAR. So it's something which is cumbersome and it takes a lot of time. So it would not be possible for me. So, but if you have some brief question, so I would be happy to answer. So again, Thank you very much, sir. Okay. Thank you very much for your time. Jazakallah. Okay. Thank you, Ji. So I'll terminate the connection. So best wishes to all of you and best of luck for your next accreditation visit. Inshallah, sir. Jazakallah khair. Mehrbani. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.